Students, today I am going to start uh, the new module, okay, the module 1. As mentioned in your syllabus, we will cover following topic under this module. Those topics are the LT system wiring components. Okay. Wiring जो हम लोग करते हैं LT सिस्टम में, लो वोल्टेज सिस्टम में, जो हाउस होल्ड्स या कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसमें जो वायरिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे. Selection of cables. I think this topic I have already covered in module 4. Okay, so I don't think that I need to explain once again. Okay, I have explained in detail the selection of cables. After that, we will talk about the different types of the wires. Basically, the wire which we are using for the wiring purpose. Okay, the different type of the switches we are using, distribution box, metering system, tariff structure. Okay, so all these things which are related with the LT system wiring components that we will see. Okay, then we will discuss about the protection components we are using for this electrical wiring system. Okay, so under this topic we will see about the fuse, MCB, MCCB, ELCB. Okay, so what are the names and how they work? Okay, so we will see about these protection components one by one. Okay, then inverse current characteristics, the symbols of the different components, and the single line diagram of a wiring system. Okay, how we will use different symbols in case of a single line diagram. When we draw a single line diagram for a wiring system, then we will use different symbols. So we will see these things also. After that, we will discuss about the contactors, isolator, little bit about the relays, MPCB, okay, and electric shock and the electrical safety practices. So again, this electric shock and electrical safety practices, little bit portion I have covered in module 4. Okay, when we were discussing about the earthing systems. Okay, what are different types of earthing and all such things. So we will see that some other portion we will also cover under this electric shock and electrical safety practices. Okay, so these things we have to cover under this module. Okay, so today we will start with the electrical wiring and its components. Okay, so what is electrical wiring? Simply हम लोग तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या है, ठीक है, उसी को एक लैंग्वेज में एक डेफिनेशन में इसको यहाँ पर लिखा गया है. ठीक है, क्या कहता है ये? A process of connecting various accessories for distribution of electrical energy from supplier's meter board to home appliances such as lamp, fan and other domestic appliances is known as electrical wiring. Simple. Okay, क्या कहता है ये? It is a process of connecting various accessories. बहुत सारे components है जिसको कि connect करना है हम लोगों को. ठीक है, why? For distribution of electrical energy. Clear? और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रहा है? फ्रॉम सप्लायर्स मीटर बोर्ड. जो सप्लायर है हमारा घर में, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, जो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करेंगे बहुत सारे अप्लायंसेस, लैंप, फैन, ट्यूबलाइट्स.
ठीक है। सो उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है फ्रॉम मीटर बोर्ड, ठीक है। सप्लायर्स मीटर बोर्ड, सप्लायर्स मीटर बोर्ड मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके द्वारा जो एक मीटर बोर्ड इंस्टॉल किया गया है, उस मीटर बोर्ड से घर में डिफरेंट पोर्शंस में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उसको हम लोग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं by connecting, by using different accessories, different components. Okay, so connecting these different components in order to supply the electricity to home appliances. Okay, this complete process is known as electrical wiring. Okay, am I clear? Okay, so अब हम लोग देखते हैं कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। फर्स्ट वन इज स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच इज यूज टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। द पर्पस ऑफ द स्विच इज टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑन और ऑफ। करंट ऑन हम लोग कर रहे हैं so that the supply will reach to the appliances, supply will reach to the fan or tube light, okay, or this will also able to switch off the flow of electricity to the fan or tube light or other appliances. Okay, what I mean, स्विच का हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन और ऑफ करने के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा वायरिंग के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तक फ्लो कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को आइदर हम लोग ऑन और ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। दैट इज व्हाट रिटन हियर, स्विच इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? सो इट शुड so operate that it must make or break the circuit. सर्किट को आइदर मेक और ब्रेक करता है, ठीक है, ऑन और ऑफ करता है, अदर लैंग्वेज में हम लोग ये कर सकते हैं। एट द इंस्टेंट ऑफ ब्रेकिंग द स्विच, जब स्विच को ब्रेक कर रहे हैं मतलब कि ऑफ कर रहे हैं हम लोग, इट शुड ब्रेक द करंट। करंट भी हमारा ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब करंट अब आगे फ्लो नहीं करेगा, स्विच के आगे करंट फ्लो नहीं करेगा अगर हम लोग स्विच को ऑफ कर रहे हैं। सो दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आर्क बिटवीन स्विच ब्लेड्स एंड कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स। स्विच हमारा इस तरह का होना चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चर हम लोग करेंगे, कि जब स्विच को ऑन और ऑफ कर रहे तो वहां आर्क प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। आर्क क्यों प्रोड्यूस हो सकता है वहां पर? Because there is transition. जब किसी दो वायर को हम लोग आपस में टच करते हैं और उसको फिर अगर रिमूव करते हैं तो वहां आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वही हमारा जब दोनों कांटेक्ट में लाते हैं, दो डिफरेंट वायर्स which are carrying electricity, if we will make in contact with them, with each other, then what will happen? There will be some arc. Okay, so ये स्विच के साथ जो कनेक्शन होगा, that connection of the wire should be tight enough. Okay, there should not be loose connection. Okay, so that there will no formation of arc. So formation of arc that may damage the switch contacts, and such arc is avoided usually by means of providing a spring to movable blade so as to have a quick action. Okay, तो यहाँ पर एक कभी-कभी किस तरह के स्विच है उस पर डिपेंड करता है कि एक स्प्रिंग अरेंजमेंट भी हम लोग करते हैं इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, सो दैट आर्क का प्रोडक्शन
को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द स्विचेस। देयर आर 8 different types of the switch that I have mentioned in this slide. Okay, one by one I will explain about the different types of the switch. ये जितने भी different types of the switch हैं, आप लोग जरूर इसको देखे होंगे घर में, ठीक है, लेकिन इस चीज को टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम है उस स्विच का, ये चीज शायद ना पता हो कई लोगों को। ठीक है, बट आई एम श्योर दैट all of you have seen these different types of the switches either in your home or some other places also. Okay, ये सारे स्विच तुम लोगों ने जरूर देखे होंगे। So what are the different types of the switches? The first one is the surface switch, also called as tumbler switch. Second one is flush switch. Then the pull switch, also called as the ceiling switch. Fourth one is grid switch. Fifth one is push button switch. Then the sixth one is rotary switch. Seventh one is ironclad water tight switch. And the last one is night switch. Okay. So देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्या है हमारा, सरफेस स्विच और टम्बलर स्विच। इसके बारे में तो बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस डायग्राम, दिस इमेज, ये देखा है आप लोगों ने इस तरह के स्विच को? Yes, sir. Definitely, I think Yes, sir. you have seen. Okay, this type of switch is called the surface switch or tumbler switch. Okay, so the surface switch are those which are mounted on the mounting block directly fixed over the surface of the wall. Okay, माउंटिंग ब्लॉक क्या हो गया, जो हमारा बोर्ड होता है, ठीक है, इसको हम लोग स्विच बोर्ड कहते हैं बेसिकली, जिसमें कि स्विच, रेगुलेटर्स, फैन के या फिर सॉकेट्स, ये सब इंस्टॉल किए हुए रहते हैं। पूरा हमारा जो बोर्ड होता है ये उसी को कह रहा है माउंटिंग ब्लॉक। ओके, दैट माउंटिंग ब्लॉक इज डायरेक्टली फिक्स्ड ओवर द सरफेस ऑफ द वॉल, वॉल के ऊपर फिक्स होता है। ठीक है, उसी माउंटिंग ब्लॉक पर ये सरफेस स्विच हमारा माउंट किया हुआ रहता है, इंस्टॉल किया हुआ रहता है। ठीक है, दैट इज सच टाइप ऑफ स्विचेज प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द वॉल। ठीक है, वॉल के सरफेस से प्रोजेक्ट, उससे कुछ ऊपर रहता है, इंस्टॉल्ड ऑन द माउंटिंग ब्लॉक। That is the meaning of this sentence. The surface switches are those which are mounted on the mounting block directly fixed over the surface of the wall. That is such type of switches project out of the surface of the wall. It is clear? Yes, sir. Okay. So ये switch जो है हम लोग इसमें दो तरह का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह के नॉर्मली ये स्विच होते हैं। एक होता है हमारा वन वे स्विच और टू वे स्विच, ये भी यूज किए होंगे घर में। वन वे स्विच में क्या होता है, द स्विच इज प्रोवाइडेड विद अ सिंगल पोल टू कंट्रोल वन लाइट पॉइंट एट अ टाइम। एक लाइट के लिए, एक फैन के लिए एक स्विच, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, जिसमें कि सिंगल पोल होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन वे स्विच। टू वे स्विच में क्या होता है, these are used for wiring circuits which are to be controlled from 2 points independently, such as staircase wiring. Okay. कई बार हम लोग यूज करते हैं ना कि कोई एक बल्ब है, उसका दो डिफरेंट जगह से उसको स्विच से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सीढ़ी वगैरह के पास हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, एक स्विच ऊपर हम लोग रखते हैं, उससे कनेक्ट कर देते उस बल्ब को, और उसी बल्ब को एक दूसरे नीचे में स्विच रहता है, सो दैट हम लोग उसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या तो ऊपर से या नीचे से। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। तो वही कह रहा है ये टू वे स्विच। ठीक है,
these are used for wiring circuit which are to be controlled from 2 points independently, such as staircase wiring. So ये भी हमारा एक तरीका होता है वायरिंग करने के लिए इस टम्बलर स्विच में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ स्विच हम लोग देखते हैं क्या है। सेकेंड वन इज फ्लश स्विच। Okay, see this diagram, first one. This is called the flush switch. हम लोग यूज करते हैं इसको डे टू डे लाइफ में अपने घर में, ठीक है। फ्रिक्वेंटली इसको यूज करते हैं, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं फ्लश स्विच। So the flush switch are fixed in flush with the wall and do not project out. Okay, ये जो है हमारा it is fixed in flush with the wall, जो वॉल है उसी के साथ ये फिक्स किया हुआ रहता है। एंड डू नॉट प्रोजेक्ट आउट, जितना ज्यादा प्रोजेक्ट रहता है हमारा टम्बलर स्विच, ठीक है, वॉल के ऊपर में हमारा स्विच बोर्ड है, उसके ऊपर में फिर ये हमारा स्विच दिया हुआ रहता है। सो दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ दिस फ्लश स्विच। ओके, प्रोजेक्शन, लिटिल बिट ऑफ प्रोजेक्शन इज देयर बट नॉट but the projection is less compared to the tumbler switch. Okay, so such type of switches are used where high quality performance and appearance are desired. क्या कहने का मतलब है, इस तरह के स्विच को हम लोग यूज करते हैं जहां हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस और अपीयरेंस आर डिजायर्ड, मतलब देखने में भी हमारा पूरा का पूरा जो भी है वो अच्छा लगे, इस तरह से वायरिंग किया हुआ हो, इस तरह से इंस्टॉलेशन किया हुआ हो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, कि ये देखने में भी अच्छा लगे और इसका परफॉर्मेंस जो है वो भी हमारा बेटर हो, ठीक है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फ्लश स्विचेस आर बेटर देन टम्बलर स्विच एंड इट लुक्स बेटर। इसका जो अपीयरेंस है दैट इज गुड compared to the tumbler switch. Okay, sometimes these switches are called piano switch. Okay, मार्केट में नॉर्मली हम लोग इसको पियानो स्विच हम लोग कहते हैं जब खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लश स्विच। द थर्ड वन इज द पुल स्विच, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सीलिंग स्विच। ओके, दिस वन ये बहुत कम मतलब देखे होंगे, आई थिंक घर में फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, कहीं कहीं यूज होता है इस तरह का स्विच का। बेसिकली ये हैंग किया हुआ रहता है और इसको जब हम लोग पुल करते हैं तब ये ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। इस तरह का भी स्विचिंग अरेंजमेंट कई जगह देखने मिलेगा। नॉर्मली आजकल एक आता है हमारा फैन जो कि वॉल में हम लोग उसको माउंट करते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर देख रहे होगे कि दो कॉर्ड के थ्रू रहते हैं ना, जिसको कि हम लोग पुल करते हैं तो उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, या उससे हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस वैसा ही ये कुछ अरेंजमेंट है पुल स्विच का, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सो इन सब चीजों को देखे हो तुम लोग, जितना भी चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दोज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ओके, बट you did not know the technical name and the some additional details. Okay, that is what I am providing to you. Okay, so that is there is no so much complicated things that you cannot understand. So the pull switch or the ceiling switch, they are fixed on the ceiling. Okay, that is why it is called the ceiling switch, and all the live parts are out of reach of the operator. ठीक है, ये सीलिंग में इसको फिक्स किया जाता है, इसका जो भी ऑपरेटिंग पार्ट्स है that are not accessible to the operator easily, that is not accessible. Okay,
The switch has a strong mechanical action, okay, and is usually operated with a single pull on the cord for an on and off position. ठीक है, इस cord का हम लोग यूज करते हैं on और off करने के लिए, and it is mechanically strong enough. Okay. These switches are used in bathrooms where water heaters are used, sometimes also used in bedrooms and the restaurants also. Okay, or some other places you can also use such type of the switching arrangement. Okay, there is no limitation. Okay. So we have seen the tumbler switch, flush switch, and the ceiling switch. Three different types of the switches. Okay. The fourth one is grid switch. Okay, this one is the grid switch. Okay, it is very much similar to the earlier switch what we have discussed. Okay, the tumbler and the flush switch. Okay, उसी तरह से है हमारा, but इसमें difference क्या है थोड़ा बहुत. The grid switches are similar to tumbler switch, okay, or the flush switch, except that they are lighter and are portable type. Okay, इसका weight कम होता है और ये portable type होता है, so that they are quite useful for the portable machines such as hand drill, portable grinder, etc. Okay, समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं. ये जो ग्रिड स्विच है इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर पोर्टेबल मशीन्स, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए. ड्रिलिंग मशीन्स, जो ग्राइंडर हम लोग यूज करते हैं पोर्टेबल टाइप, ठीक है, उसको सप्लाई देने के लिए नॉर्मली देखे भी होंगे. ठीक है, अलग से उसको हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ द स्विच यूज करते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए. That is not fixed on the wall basically. Okay, this type of the switches we are not fixing it on the wall, on the mounting blocks. Okay, that is the benefit of this type of the switch. ये क्या होता है, बैक साइड से ये कवर रहता है, इसका जो भी लाइफ पार्ट्स होते हैं टर्मिनल्स that are covered from the back side also. Okay, so that there will not be any possibility of electric shock. ठीक है ना. तो ये हमारा इस तरह का एक स्विच होता है which is used for the hand drill or portable grinders or some other or different portable machines. Okay, the fifth one is the push button switches. Okay, you have already seen, you have also seen this type of the switches, push button switch. कहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं, बेल सर्किट, रेफ्रिजरेटर्स में भी होते हैं इस तरह का स्विच का यूज, लाइटिंग सर्किट्स में हम यूज करते हैं. कई जगह हम लोग जो मोटर होते हैं घर में, जो हम लोग मोटर यूज करते हैं पंप के लिए, वहां पर भी जिसको मोटर कंट्रोल यूनिट होता है वहां पर भी इस तरह के स्विच का हम लोग यूज करते हैं, पुश बटन स्विच होता है ना, देखे हो ना इस चीज को. Yes, sir. So that is another type of the switch that we are using. Okay, moving to next one, rotary switch. फिगर देखकर ये भी समझ में आ रहा है, सिंपल. ठीक है, इस तरह का स्विचिंग अरेंजमेंट जो भी रहता है. ठीक है ना. ये क्या कहता है, रोटरी स्विच. The rotary switches are much different from that of ordinary tumbler switch. ठीक है, जो tumbler switch है उससे काफी डिफरेंट है ये. यहाँ पर क्या होता है इसमें, it consists of an insulated handle. This is the insulated handle to which blades are fixed. ठीक है, इसके बैक साइड में क्या होता है, हमारा ब्लेड्स होते हैं that is fixed with this.
insulated handle. These blades moves in steps by the movement of the handle. इस हैंडल को जैसे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके साथ जो ब्लेड्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जो कि इसके अंदर है, जो ब्लू कलर का जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर में होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, ये भी हैंडल के साथ मूव करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो जो ब्लेड्स होते हैं वो भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज ब्लेड्स मूव करेगा along with this insulated handle. Okay, that is what written here. These blades move in steps by the movement of the handle and make contact with the terminals to which are connected the wires in the electric circuit. Okay, इसको जैसे ही मूव करेंगे तो ये डिफरेंट टर्मिनल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टर्मिनल्स में आकर के वायर कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग वायर्स। इसको जैसे मूव करते हैं तो वो इस वायर का जो अंदर का टर्मिनल होता है उस टर्मिनल को या तो टच करेगा, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पर जो टर्मिनल होगा इनसाइड उसको जाकर के टच करेगा। सो लाइक दिस इट विल मेक और ब्रेक द सर्किट। ओके, इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट कहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर इस तरह का यूज होता है, अगर कहीं हम लोग देखेंगे इसको, पैनल्स होगा कहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पैनल अगर कहीं होगा, अगर देखे होगे, ध्यान दिए होगे, या तो वहां पर इस तरह के स्विच को देखने का मतलब यूज होता है, इस तरह के स्विच, रोटरी स्विच, पैनल्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स जो भी होते हैं। तो द हैंडल मोशन इज कंट्रोल्ड बाय अ स्प्रिंग, ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। As the handle is moved through a quarter turn, the blade is released and move over quickly with the help of the spring to make or break the circuit. तो एक स्प्रिंग का हम लोग यूज करते हैं इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ये हो गया हमारा रोटरी स्विच। The next one, last two different types of the switches are ironclad switch and the knife switch. Okay? This figure represents the ironclad switch. Okay, you have already seen this one in your households. Okay, ये क्या होता है, इस तरह के स्विच में हम लोग क्या करते हैं, ये हैंडल होता है, इस हैंडल को हम लोग अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए। इस हैंडल के साथ देखो ये एक हमारा क्या है, एक बस बार टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है, जिससे कि ये दोनों जो फ्यूज है यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, कनेक्शंस है, अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो कि इस हैंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, इस हैंडल को मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग है। इसको जब अप या डाउन करेंगे तो ये स्प्रिंग भी अकॉर्डिंगली हमारा मूव करता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो है हमारा कॉन्टैक्ट, यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है, ये ऑन कंडीशन में है, अगर इसको हम लोग डाउन करेंगे, डाउनवर्ड इसको पुल करेंगे इस हैंडल को, तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है ये कम आउट, दिस विल कम आउट, एंड ब्रेक द कॉन्टैक्ट्स। तो इस तरह का ऑपरेट भी किए होंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑपरेटेड दिस टाइप ऑफ द स्विचेस इन योर हाउसहोल्ड्स। कई बार हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे फ्यूज को निकाल करके कहीं फ्यूज ब्लो नहीं हो गया है ना, ड्यू टू द some any faults. Okay, so the ironclad switches, they are of cast iron, okay, and they have very robust construction. Cork gasket is fitted between the cases and the cover, which makes it watertight. Okay.
So these type of the switches are used for outdoor lamp control. Okay. So this is the ironclad switch, and the last one is the knife switch. This one is the knife switch. ये भी I think तुम लोग सबके देखे ही हो. Okay, most of you are familiar with this type of the switch. Okay. The knife switch consists of blades. Okay, these are the blades which are hinged at one end. Okay, here it is hinged and are arranged to go into fork terminals or the jaw at the other end. Okay, ये जो है knife, basically this is the knife. This will make or break the contacts. Okay, ये दो टर्मिनल्स है दोनों साइड में. तो एक यहाँ पर हमारा एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग टर्मिनल हो सकता है. ठीक है, तो इस नाइफ स्विच को हम लोग मूव करेंगे. ये इंसुलेटेड पोर्शन है, इसको पकड़ करके हम लोग इसको मूव करेंगे. अगर सपोज यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये कांटेक्ट में आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर सर्किट जो है हमारा, ये हमारा ऑन होगा. ठीक है, तो अरेंजमेंट कुछ हमारा इस तरह से इसका रहता है नाइफ स्विच का. एक टर्मिनल से यहाँ से हम लोग इन करेंगे, एक टर्मिनल से इसके दूसरे साइड से इसको आउट कर लेंगे. तो इस तरह से हम लोग इस स्विच का यूज कर सकते हैं. So these are the 8 different types of the switches that we are using normally in day-to-day life or for the purpose of electrical wiring. Okay.